My dear students, good morning and Jai Hind. Children, we are now going to discuss the new unit that is ecology. My dear students, this is very important unit. Last unit of your book, but very important unit ecology, including 14 marks. That is 20% of your paper, 70 marks paper. 70 marks के पेपर में 14 marks का questions only from ecology. So you can consider that how much it is important unit children ecology. और आपको यह जान के अच्छा लगेगा बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इकोलॉजी इन्वायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई कंपलसरी है। किसी भी बोर्ड में आपको इकोलॉजी की पढ़ाई आपको कंपलसरी करनी है। एंड इवन व्हेन यू जस्ट डू द ग्रेजुएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर द इकोलॉजी इज द कंपलसरी पेपर। ओके, इकोलॉजी एक कंपलसरी पेपर होता है ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हो, एक ये इकोलॉजी का पेपर आपको देना होता है जो है जस्ट पास आउट करने के लिए। बिकॉज वी ऑल शुड अवेयर अबाउट आवर इन्वायरमेंट, अबाउट आवर इकोसिस्टम। सो चिल्ड्रन, इकोलॉजी इज द वर्ड just combines two words, in fact, that is oikos and logos. Greek words oikos and logos. Oikos means to dwell or habitate, यानी रहना, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहना, अपनी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करना। एंड लॉगस मीन्स यू नो द टू नो और ऑब्लिक स्टडी, टू नो और स्टडी। इट मीन्स इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about organisms and its habitat. The interrelationship between organisms and its habitat in which it survive. Okay, so children, what is ecology? The study of how organisms interact with their environment. ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट। आप सभी इकोलॉजी के बारे में पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं। 10th में भी एक बार आपने अवर इन्वायरमेंट और 9th में भी नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा हुआ है, तो आप इकोलॉजी से परिचित हैं। और आप एनवायरमेंटल क्लब्स में काम किए हुए हैं, इको क्लब्स में काम किए हुए हैं। जानते हैं आप कि एनवायरमेंटल साइंस इज वेरी नेसेसरी साइंस, बिकॉज विदाउट क्लीनिंग एनवायरमेंट वी कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। आप देख भी रहे हैं जैसे जैसे हम लोगों ने एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, मैनमेड एक्टिविटीज से, अर्बनाइजेशन से, डिफॉरेस्टेशन से, मॉडर्नाइजेशन से, वैसे वैसे हमें क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हैं उनका सामना करना पड़ा, क्लाइमेटीज का सामना करना पड़ा, सुनामी, अर्थक्वेक्स एंड नेचुरल काइंड ऑफ हार्बर वेव्स, लानिना, एनिनो, and now you are seeing the coronavirus and so many other destructive viruses have been born due to the pollution and man-made activities. So children, we should aware about our ecology, our environment, and the habitat in which we live, we survive. So you are seeing here the study of how organisms interact with their environment. हम इकोलॉजी में यह स्टडी करते हैं किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं बच्चों। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स मस्ट इंटरैक्ट विद बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड देम। हमें दो तरीके की चीजें सराउंड करती है, वन इज लिविंग एंड अनदर इज नॉन लिविंग। ओके, द टेम्परेचर, द क्लाउड, the rain, the pH, okay, the sunlight, the soil, these are non-living things, but without these things we can't survive. Similarly, green plants, various kind of animals, bacteria and fungi, different organisms surrounds us and we also must interact with them. So we must interact, all the organisms must interact with both the living and non-living things that surround them. हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर लिविंग थिंग और हर नॉन लिविंग थिंग से जुड़े होते हैं बच्चों, जो हमें सराउंड करता है, और उन्हीं की स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। दैट इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करते हैं बच्चों। So see here, what is ecology? Now see the scientific definition. The scientific study of interaction between organisms and their environment, focusing on energy transfer. देखिए, अब केवल environment तक भी लिख सकते हैं। The scientific study of interaction between organisms and their
इन्वायरमेंट, यह एक दीगर बात है कि इट फोकसिंग ऑन एनर्जी ट्रांसफर। बेसिकली जो हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर, या एनर्जी ट्रांसफर के आधार पर रिलेशनशिप को डिमॉन्स्ट्रेट करता है बच्चों। दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर दैट इट इज अ साइंस ऑफ रिलेशनशिप। यह एक रिलेशनशिप का साइंस है, किस तरीके से प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आपस में जुड़े होते हैं, और यह तीनों ही बायोटिक कंपोनेंट डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स पीएच, टेम्परेचर, सॉइल, इडेफिक फैक्टर्स, इन सब से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज इकोलॉजी। दैट इज द साइंस of abiotic and biotic components, that is the interaction, the interrelationship between organisms and their environment, and that interrelationship is focusing on the energy transfer. Please keep this thing in your mind that it is based on the energy transfer. अगर हम फूड चेन या फूड वेब 10th में आपने पढ़ा भी है, या पिरामिड्स की बात करें तो वह पिरामिड्स भी हम एनर्जी ट्रांसफर के लेवल पर बात करते हैं बच्चों। सो you are now seeing here that ecology is the scientific study of interaction between organisms and their environments, basically focusing on energy transfer, and it is the science of relationship, children. So now come to discuss about the introduction of ecology. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले इस इकोलॉजी का जो मतलब था वो हमें जर्मन बायोलॉजिस्ट हेकेल ने समझाया। that the meaning of the word ecology was given by German biologist Haeckel, 1869. Okay, this one is the year of the birth of our Rashtrapita Mahatma Gandhi. So I think you will never forget this year, 1869. That is the birth year of our national father Mahatma Gandhi, and in the same year, German biologist Haeckel just gave the term ecology, which combines two Greek words. मैंने पहले भी बताया कि दो यूनानी भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, which are oikos and logos. Oikos means to dwell, रहने का स्थान, meaning house, और habitat, okay, or place of living, that is रहने का स्थान, and logos means to know, to study. I have already told you the meaning of ecology. That is the branch of science which deals about the interrelationship of organism and its environment and its habitat and its surrounding. That is ecology. Because it just confined of two words, oikos and logos. Oikos means habitat, the place where the organism live, and the logos means to know, that is to study. Okay, so ecology is defined as the study of interrelationship of different organisms with each other and with their environment. ध्यान दीजिएगा, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उनका आपस में भी रिलेशन, इंटर रिलेशन, और इन्वायरमेंट के साथ में भी आपस में इंटर रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जो आपस में भी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, दैट इज बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, दैट इज द फूड सप्लाई, that is the food transfer, that is the energy transfer. That's why I have already told you that ecology is the branch of science, the scientific study of interrelationship and of organism and their habitat, and it's mainly focusing on the energy transfer, mainly energy transfer को फोकस करता है। तो आपने देखा बच्चों, इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले 1869 में जर्मन बायोलॉजिस्ट हेकेल ने यूज किया। अर्स्ट हेकेल पूरा नाम, अर्स्ट हेकेल, हेकेल ने यूज किया 1869 में। एंड इकोलॉजी कन्फाइंड विद टू वर्ड्स, ओइकस एंड लॉगस। That means oikos means to dwell or habitat, and logos means to know. And ecology is defined as the study of interrelationship of different organisms with each other and with their environment. It is concerned with general principles that apply to both एनिमल्स एंड प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को हम डिफरेंशिएट करके बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस यूनिवर्स एंड इंटरेक्टिंग विद एबायोटिक कंपोनेंट्स सराउंडिंग देम। जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हमें सराउंड कर रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, एयर, या सनलाइट, या रेनफॉल, या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या पीएच, यस, या इडेफिक फैक्टर, सॉइल,
all the abiotic factors influence the life of all the organisms, either plants or animals. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही लाइफ जो अफेक्टेड होती है इन तमाम एबायोटिक कंपोनेंट से बच्चों. दैट्स व्हाई इट इज द इंटर रिलेशनशिप. And you know very well now that this interrelationship is based on energy transfer. So now see, the ecology is the study of interaction. I just try my level best to elaborate the ecology in front of you by various slides, by various definitions. मैं अलग अलग डिफिनेशंस अलग अलग स्लाइड से इकोलॉजी को इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों. Please help me and try your level best to understand the things in a proper way and make proper notes after the class. After finishing the class, make the proper notes by using these slides as well as your respective books also. So you are seeing here that environmental components and environmental factors are of two kinds, which are abiotic factors and biotic factors. अभी हम इकोसिस्टम के बारे में भी देखेंगे बच्चों. तो इकोसिस्टम जो कि फंक्शनल यूनिट है वो भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से ही मिलकर बना हुआ है. एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के आपस के इंटर रिलेशनशिप को ही तो इकोसिस्टम कहते हैं. So you are seeing here that abiotic factors, non-living things in environment. हमारे environment में जो भी non-living things हैं, जैसे कि rocks, जिनसे weathering के बाद soil बनता है, temperature, weather, soil, water, these are abiotic components but influencing the biotic component. ये सभी abiotic components हैं, लेकिन यह बायोटिक कंपोनेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उनके सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बच्चों. और यहाँ पर देखिए, दीज आर बायोटिक फैक्टर्स लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स है वह सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं. आइदर दे आर फंजाई और बैक्टीरिया, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और प्रोटिस्टा, द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और प्लांट्स और एनिमल्स. All the living things in environment are said to be as biotic factors and biotic components. So you are seeing here the two kind of factors of ecosystem making the environment, and the study of interaction between organism and their environment is said to be as ecology. बच्चों अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इकोलॉजी कंप्लीटली समझ रहे होंगे. इकोलॉजी की मैंने कई डेफिनेशंस आपको शो किया, कई डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इकोलॉजी वह साइंस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशन एज वेल एज देयर रिलेशन विथ एनवायरनमेंट, और उनका एनवायरनमेंट के साथ में जो रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं. और यह इंटर रिलेशनशिप जो इंटरेक्शन है यह टोटली एनर्जी ट्रांसफर पर बेस्ड होता है बच्चों, यह जरूर ध्यान दीजिएगा. ओके, नाउ स्टार्ट द न्यू एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इकोसिस्टम is very important topic, and that is the interrelationship between biotic and abiotic factors present in particular environment. Ecosystem consists of all the organisms living in a community as well as abiotic factors also with they interact. उस community में जो abiotic factors हैं और जितने भी abiotic factors के साथ में interact हो रहे हैं, all the factors are collectively said to be as ecosystem. Ecosystems range from a microcosm such as an aquarium. एक छोटा एक्वेरियम भी आपने देखा है ऑफिसेस में, स्कूल्स में, घरों में भी इवन. तो एक्वेरियम जो है वहां पर एक्वेरियम भी एक छोटा सा मैन मेड इकोसिस्टम होता है बच्चों. दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम. एंड यू हैव सीन अ लार्जर एरिया सच एज लेक और फॉरेस्ट. तो लेक का भी इकोसिस्टम और फॉरेस्ट का भी इकोसिस्टम. So, regardless of an ecosystem size, its dynamic involves two main processes: energy flow and chemical cycling. ध्यान दीजिएगा, इससे नहीं मतलब है कि इकोसिस्टम का साइज छोटा है या बड़ा है, या किचन गार्डन या एक्वेरियम है या एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, इससे मतलब नहीं है. चाहे वो एक्वेरियम हो, पॉन्ड हो, फॉरेस्ट हो, लेक हो या ग्रासलैंड हो, हर इकोसिस्टम में बच्चों एबायोटिक और बायोटिक दोनों ही फैक्टर्स होंगे और दोनों आपस में एनर्जी ट्रांसफर के लिए इंटरेक्ट कर रहे होंगे. सो इट हैज बीन रिटन ओवर हियर दैट रिगार्डलेस ऑफ एन इकोसिस्टम साइज,
Its dynamic involve two main processes, which are energy flow. You are seeing energy flow and chemical cycling. Chemical cycling, that is biogeochemical cycle, as you know. Children, energy flows through ecosystem while matter cycles within them. जब एनर्जी फ्लो हो रहा होगा तो साथ में वेरियस काइंड ऑफ मैटर्स भी साइक्लिंग हो रहे होंगे इकोसिस्टम के अंतर्गत. So, an ecosystem comprises of two basic component. तो क्या समझ रहे हैं आप? इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे? दो कंपोनेंट्स या दो फैक्टर. And the relationship between the biotic components and abiotic components of an ecosystem is called as holosynosis. ध्यान दीजिएगा, holosynosis बोलते हैं. होलोसिनोसिस इज द टर्म, नोट कर लेंगे जरूर इसको आप. होलोसिनोसिस इज द टर्म द यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, दैट इज नोन एज होलोसिनोसिस. एंड चिल्ड्रन, नाउ लेट अस स्टार्ट द एबायोटिक कंपोनेंट्स इन डिटेल. एबायोटिक कंपोनेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है आपको. ए मीन्स एब्सेंट, बायो मीन्स लाइफ, यानी ऐसे कंपोनेंट्स या फैक्टर्स जहां पे लाइफ तो ना हो लेकिन जो लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी हो, जिसके एब्सेंस में लाइफ सर्वाइवल असंभव हो, विच आर सेड टू बी एज एबायोटिक कंपोनेंट्स. These includes the non-living physico-chemical factors such as air. फिजिको-केमिकल, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल फैक्टर भी और केमिकल कंपोजिशन के कारण केमिकल फैक्टर्स भी. तो these includes the non-living physico-chemical factors such as air, water, soil and the basic elements and compounds of environment. ध्यान दीजिएगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं बच्चों? These includes the non-living, जिसमें लाइफ ना हो, नॉन लिविंग फिजिको-केमिकल फैक्टर्स. फिजिको-केमिकल फैक्टर्स सच एज एयर, वाटर, soil and the basic elements and the compounds present in the environment. Abiotic factors are broadly classified under three categories. इनको अलग अलग अगर हम कैटेगरीज में बांटना चाहें तो वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स, which include the climatic regime and physical factors of the environment like light, humidity and atmospheric temperature and wind. Beside these two factors, third one is edaphic factors. Edaphic जो कि soil से related होता है बच्चों. Edaphic factors, कई बार ये it has been asked in exams. Edaphic factors which are related to the structure and composition of soil. ध्यान दीजिएगा, एडेफिक फैक्टर्स मैंने बताया आपको, यह पीडोलॉजी से रिलेटेड है. पीडोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट सॉइल कंपोजिशन, सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल प्रोफाइल एज वेल एज pedogenesis, that is soil formation. So you are seeing that the edaphic factor are related to the structure and composition of soil including its physical and chemical properties. soil की physical और chemical properties को भी include करता है, like soil and its type, soil profile, minerals, organic materials present in the soil, soil water, that is capillary water present inside the soil crevice, soil organisms which are the microorganisms present inside the soil profile, inorganic substances like water, carbon, sulfur, nitrogen, फास्फोरस एंड सो ऑन. ये सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ये तमाम कंपोनेंट्स एडेफिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं बच्चों. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड ह्यूमिक सब्सटेंसेस, जो ह्यूमस बनता है, एमार्फस ह्यूमस, उस ह्यूमिक सब्सटेंसेस को भी एडेफिक फैक्टर के अंतर्गत रखा गया है. यानी सॉइल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन से रिलेटेड हर एक फैक्टर एडेफिक फैक्टर कहलाते हैं. वेयर एज द फिजिकल एंड केमिकल climatic factors we have seen already are the part of abiotic factors in which life is not persistent but which are necessary for the survival of life. So this one is the first part of ecosystem. Okay, let us discuss the another part, that is biotic component. हाँ, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक इकोसिस्टम के अंतर्गत दो फैक्टर्स होते हैं,
चाहे वो इकोसिस्टम कोई भी हो। पॉन्ड, अभी हम लोग आगे टाइप्स की भी बातें करेंगे, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल स्थलीय, जमीन पे पाए जाने वाला, लाइक ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट इकोसिस्टम, या एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, वाटर वाला एक्वेटिक, लाइक पॉन्ड, लेक, मेरीन इकोसिस्टम। In any ecosystem, children, we have to see the abiotic and biotic components. So after seeing the abiotic components, now just visualize the biotic components. Bio means life, यानी ऐसे components की बात अब हम करने जा रहे हैं इकोसिस्टम की, वो components जिसमें की life हो। The biotic components of ecosystem, या living components, bio means life. So living components of an ecosystem is a community of organisms. यह organisms की एक community होती है, either of plants or animals, which is made up of many different interdependent population. यहाँ पर अलग अलग तरीके की पॉपुलेशंस होती है बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि आपस में एक दूसरे को के ऊपर डिपेंड करते हैं on the basis of their nutritional requirement. So, children, you are seeing here the biotic components of an ecosystem, that is the living component of an ecosystem, is a community of organisms like plants or animals which made up of many different interdependent population, जो आपस में बने होते हैं interdependent population के आधार पे। and three types of organisms there are: producers, consumers and decomposers. ध्यान से समझिए बच्चों, producers are green plants, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वह प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स चूंकि उनके पास क्लोरोफिल है, वह सनलाइट के फोटॉन्स को ट्रैप कर लेते हैं मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, दैट इज C6H12O6। इन प्लांट फिजियोलॉजी, in photosynthesis chapter we shall discuss in detail about the food production of green plants. So they can prepare their own food material, they can manufacture, that's why they are said to be as producers. तो producers केवल green plants होते हैं, और चूंकि वह sun के एनर्जी को ट्रेस करते हैं, that's trap करते हैं, that's why sun is said to be as अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए सोलर एनर्जी या सन की एनर्जी को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं बच्चों। Second, biotic components you are seeing the consumers. Consumers are heterotrophs. Consumers are various animals which directly or indirectly depend upon producers for their nutritional requirement. Consumers वो एनिमल्स होते हैं, सभी एनिमल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। And children, consumers are divided into primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. Primary consumers are herbivores. जो primary consumers होंगे वो herbivores होंगे which directly depend upon producers for their nutritional requirement. ऐसे consumers जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, दे आर सेड टू बी एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो शाकाहारी होते हैं, herbivores like grasshopper, okay, like goat, okay, like deer, they are belonging to primary consumers. Now let us discuss the secondary consumers. Secondary consumers are carnivorous animals. They are carnivores, मांसाहारी। They depend upon the primary consumers for their nutritional requirement. वह प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, लाइक फ्रॉग जो ग्रास हॉपर को खाता है, ओके, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इफ रैट को, तो रैट को अगर प्राइमरी कंज्यूमर में लेंगे तो स्नेक्स विल बी एट द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। So, if we talk about the pond ecosystem, if the phytoplanktons are the producers, then the smaller fishes, insects, and zooplanktons are the secondary consumer. Zooplanktons are the primary consumers, but small fishes and insects are the secondary consumers, as well as small fishes are also belonging to secondary consumers. So, secondary consumers are carnivorous animals which depend upon the primary consumers फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं बच्चों, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड
category of biotic components, which are decomposers. Very, very important category, decomposers. And you know, decomposers are only two in this universe, which are bacteria and fungi. डिकम्पोजर्स केवल दो ही है बच्चों, बैक्टीरिया और फंजाई, which naturally decompose the dead complex and organic material into inorganic material. हम बोलते हैं मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है. That decomposition, that degradation of dead complex and organic material is carried out through only these microorganisms, which are bacteria and fungi. That's why they are collectively known as natural scavenger. ये हमारे प्रकृति को नेचुरली साफ कर रहे होते हैं हर डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनऑर्गेनिक मटेरियल में डिकम्पोज करके. तो इस तरीके से बच्चों आपने यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट्स में अलग अलग कैटेगरी देखा. एबायोटिक कंपोनेंट्स में यहाँ पर बच्चों आपने क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिजिकल और केमिकल, इसके बाद इडेफिक फैक्टर देखा. और जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स में आपने तीन कैटेगरीज देखी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स. और कंज्यूमर्स के अंदर भी आपने तीन अलग अलग कैटेगरीज देखी, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स, and tertiary consumers, which are top carnivores like lion, like tiger, which are top carnivores in pond ecosystem. The large fishes are the top carnivores level. That's why they are said to be as tertiary consumers. So in this way, children, we have seen the ecosystem and their components. Now discuss about the components of ecosystem through the ray diagram. Abiotic components, we have seen the climatic and edaphic factor. Climatic factors like rain, light, wind and temperature. Whereas the edaphic factors belonging to the soil pH, the minerals present in soil and the topography, that is the soil profile. And here you are seeing the biotic components, which are producers, consumers and decomposers. Producers, which are autotrophs, green plants preparing their own food material by the process of photosynthesis. Consumers are the animals, heterotrophs, which depend upon the producers directly or indirectly. And the decomposers are the bacteria and fungi, saprotrophic organisms depending upon the dead and decaying materials for their nutritional requirement. They are said to be as saprotrophs, and they decompose the dead complex and organic materials into inorganic materials. अब बच्चों हम कंज्यूमर्स के भी टाइप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, या डिपेंडिंग अपॉन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. प्राइमरी कंज्यूमर्स तो शाकाहारी होंगे, हर्बीवोर्स, इनको खाने वाले सेकेंडरी, इनके ऊपर डिपेंड टर्शियरी, और इनके ऊपर डिपेंड फाइनल वाले जो है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं. सो you are just now seeing the components of ecosystem, which are abiotic components and biotic components. Now see the type of ecosystem. Children, types of ecosystem are basically divided. Ecosystem can be divided into two parts, which are aquatic and terrestrial. नाम से ही पता चल रहा है, जलीय और स्थलीय. The ecosystem refers to the ecosystem. Aquatic ecosystem refers to the ecosystem which exists in water bodies. जो वाटर बॉडी में एग्जिस्ट करेगा, लाइक ओशियन एंड फ्रेश वाटर. अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी हम नेचुरल और आर्टिफिशियल में बांटे बच्चों, तो एक्वेरियम इज द आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम, वेयर एज द पॉन्ड, द लेक आर द नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम. नाउ डिस्कस द टेरेस्ट्रियल, स्थलीय. These are found anywhere away from the water bodies. वाटर बॉडीज से दूर, रॉक्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर जो इकोसिस्टम रहेगा, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ले लीजिए, डेजर्ट इकोसिस्टम को ले लीजिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को ले लीजिए. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, चिल्ड्रन. ओके, नाउ यू आर सीइंग हियर द पॉन्ड इकोसिस्टम consisting all the kind of components, abiotic and biotic, water, soil, pH, temperature, all the things are there, sunlight, as well as all the biotic components you are seeing here. The algae and phytoplanktons are producers, the small insects, small fishes are primary consumers, larger fishes are secondary consumers, and the top
carnivore, the sharks and the very large fishes are tertiary consumers. Similarly, the bacteria and fungi and other microbes present inside the bottom of pond are said to be as decomposers. So in pond ecosystem, in any ecosystem, children, you can see the various kind of components of ecosystem. See here, in pond ecosystem, you are seeing the producers like hydrilla, typha, various kind of hydrophytes, aquatic plants, phytoplanktons, which are the submerged lower plants like algae, consumers, primary, secondary, and tertiary, various heterotrophic organisms present inside the ponds. The primary consumers are benthos, the animals associated with living plants, detrivores, and some other microorganisms are said to be as benthos, whereas the zooplanktons also, the chiefly rotifers, protozoans are the zooplanktons which are depending upon the phytoplanktons for their nutritional requirements, children. You are seeing here the secondary consumers also, insect and fishes. I have told you. Tertiary consumer, the larger fishes, turtles. Okay, these are the tertiary consumers. And finally, the microorganisms present in the bottom of pond are said to be as decomposers. So, in this way, my dear kids, we have started ecology today and just seen the various components of ecosystem. In the next class, we shall discuss about the rest part of ecology. Thank you very much.